તો રાજપીપળામાં બે આંકલાઓ વચ્ચે જાહેર રોડ પર 1 કલાક સુધી ચાલ્યું આંકલા યુદ્ધ। રાજપીપળાના લીમડા ચોક રોડ પર આ ઘટના ઘટી છે, જેમાં આંકલાઓએ બે સ્કૂટર સવારને અડફેટમાં લીધા। સ્કૂટર સવાર સ્કૂટર છોડીને ભાગ્યા હતા, જેના કારણે જાહેર રોડ પર રાહદારીઓ, વાહન ચાલકો અને સ્થાનિકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો। તો આંકલા યુદ્ધ અહીં જોવા મળી રહ્યું છે। લોકો હેરાન પરેશાન છે। બે સ્કૂટર સવારને આંકલાઓએ અડફેટે લીધા। सूरतना डुम्मसनी होटलमां दारूनी महफिल पकड़ाई है। दारू पार्टी करता बे महिला आर्टिस्ट और 4 नबीरा झड़पाया है। डुम्मस पोलीसे गुनो नोंधीने वधु कार्यवाही हाथ धरी है। डुम्मसमां आवेली एक होटलमां चालती हती दारूनी महफिल, जेनी पर पोलीसे मोडी रात्रे दरोड़ा पाड्या हता। आ रेड दरमियान बे महिला आर्टिस्ट सहित कुल 6 युवक युवतीओ झड़पी पाड्या है। पोलीसे आ तमाम सामे कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी है। तो बे महिला पण झड़पाई है। होटल में चालती दारूनी महफिल पर पोलीस द्वारा रेड करवामां आवी हती। 4 नबीरा पकड़ाया है। डुम्मसनी होटल में दारूनी महफिल चाली रही थी। कीर्तेश जोड़ाया है फोन लाइन पर। कीर्तेश, शुं छे समग्र घटना, शुं वधु विगतो छे आपनी पासे? बिल्कुल, सूरत डुम्मस पोलीसनी हदमां आवेला वीकेंड होममां महफिल चालती होवानी जानकारी सूरत पोलीसने डुम्मस पोलीसने मळी हती। पोलीस तात्कालिक घटना स्थळे दौड़ी जई तपास शरू करी हती। त्यारे पोलीसने अहींयाथी दारूनी महफिल करता 4 युवको અને 2 યુવતીઓ મળી આવી હતી। ખાસ કરીને આ જે વીકેન્ડ હોમ છે તેમાં ગૌતમ પટેલ હોટલના માલિક છે। 464 જેટલી રૂમો છે તે હોટલની છે। 100 જેટલી રૂમો માલિકોને આપવામાં આવેલી હતી। ખાસ કરીને 443 નંબરની રૂમ છે તેની અંદર આ પાર્ટી ચાલતી હતી। નીરજ પ્રમોદ વ્યક્તિએ આ નામનો દસ્તાવેજ છે હોટલનો અને દર્શન નામના કોઈ વ્યક્તિએ આ હોટલની રૂમ ભાડે કરી હતી। જે પ્રકારે દારૂની મહેફિલ હતી, તમામ લોકોને પોલીસે ધરપકડ કરી મોડી રાત્રે સુરત સિવિલમાં મેડિકલ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ખાસ કરીને આ મહેફિલમાં 4 યુવકો અને 2 યુવતીઓનો સમાવેશ થવા પામ્યો હતો। जी बिल्कुल कीर्तेश, आभार समग्र माहिती बदल। तो डुम्मसनी होटलमां दारूनी महफिल पकड़ाई है। फक्त सामो जोवानी बाबतमां घरमां आग चंपी करवामां आवी। भावनगरमां असामाजिक तत्वोनो आतंक। अदावतमां मारामारी करी घर फूंकी दीधुं। मारामारी करीने मकान सळगावी दीधुं। सामे जोवानी बाबते अगाऊ पण बबाल थई हती। पोलीसे बंने पक्षो सामे गुनो दाखल कर्यो छे। अमदावादमां पाननी पिचकारी बाबते हत्या। जुहापुराना संकलित नगरमां हत्यानो बनाव सामे आव्यो छे। पाननी पिचकारी बाबते युवकनी हत्या थई। वेजलपुर पोलीस स्थळ पर पहोंची अने समग्र मामले वधु तपास करवामां आवी रही छे। तो पाननी पिचकारी जेवी नजीवी बाबते हत्या करवामां आवी छे, जे द्वारा पोलीस वधु तपास करी रही है। तो जुहापुरानी आ समग्र घटना। पान की पिचकारी के बारे में उनने बोला तू गाली देती हैगी। भाईजान बैठे थे तो उनने यूँ बोला मैं गाली नहीं देता हूँ। ये बारे में मगजमारी हुई थी।